नमस्ते, मेरा नाम सरन्या राजकुमार। तो आप सब जानते हैं हर जूम शो में हम सब मिल रहे हैं। तो आज का जूम सेशन में अभी आज जो ज्वाइन किए हैं सब लोगों को मैं पहले धन्यवाद मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम लोग इसी हेल्थ अवेयरनेस टॉक में हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात किए हैं। पहले तो केफ्लेक्स प्रोडक्ट के बारे में बात किए और आयन नैनो प्रोडक्ट के बारे में बात किए। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात किए हैं। आज का सेशन में हम लोग हमारा केलिंग हेल्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले थे, क्योंकि जो केलिंग में जो ज्वाइन करते हैं उस समय पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारा केलिंग हेल्थ प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि केलिंग हेल्थ प्रिंसिपल क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसे है तो क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग इसी प्रोसेस में हमारा प्रोडक्ट्स है। इसलिए जब जो ज्वाइन करते हैं केलिंग में जो ज्वाइन करते हैं पहले हम लोग इसी केलिंग हेल्थ प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बताएंगे। इस हेल्थ प्रिंसिपल के बारे में आज बात करने वाले थे। हमेशा इसी हेल्थ सेशन में बहुत सारे लोगों ने डिमांड किए तो इस सेशन हिंदी में होंगे तो वो अच्छी हो सकती जैसे। इसलिए आज इस सेशन हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा ब्रांच कोऑर्डिनेटर मिस्टर सुमंता सरकार आज हमारे पास जुड़ चुके हैं, और हमारे पास हमारा ट्रेनर मिस्टर श्रीधर आरुमुगसामी भी आज जुड़ चुके हैं। सेशन शुरू करने के पहले लेट मी से फ्यू वर्ड्स अबाउट मिस्टर श्रीधर आरुमुगसामी. Sridhar Arumugasamy sir, he is born and brought up in Madurai. He is an ex-employee of Kaling. Actually he is a musician also. He has completed his BSc Max. उनको 34 years experience है इसी ट्रेनिंग में। वो बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट करते हैं बहुत सारे प्लेसेस में, और he also gives technical training about programming languages and algorithms, and he is having interest in neuro-linguistic programming, कंप्यूटर नेटवर्क एंड हेल्थ। आज हमारे पास वो जुड़ चुके हैं हमारे केलिंग हेल्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले के लिए। पहले बिफोर गोइंग टू द सेशन, लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन वीडियो। Please put your hands together and please welcome our trainer, Mr. Sridhar Arumugasamy. Okay. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, audible. Okay, great. Because once again, I'm sitting in a remote corner of Tamil Nadu. Okay, I'm maybe some of you might not know. Maybe Sharanya also. I have a doubt. I'm sitting in Keelakarai. Okay, it's actually one of the a remote place you would find that. So let's begin this. So is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Fine. So this session will be a combination of English and Hindi. So it will go a little slow so that you would find that everybody would be able to gather every point. So on behalf of K-Link, let me welcome you. So let's begin. The first slide, okay, is a very important thing. It says, take care of your body. Only you can move from place to place. Say, for example, I moved from Coimbatore and then to Chennai and then to Madurai and then to Kelakarai and then I go down to Bangalore, I go to Hyderabad. But wherever I go, there's only one body where I can live in. So we have to be giving 100% care for it. Sumata sir. Yes. हम लोग बहुत सारे गांव, शहर और दूसरे देशों में भी जाते हैं, लेकिन हम लोग एक ही शरीर में रहते हैं और हमको इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सर। Okay. So when I first had a meet with K-Link ex managing director Mr. Devadas and Shyam Prakash, one thing where they said was, this is a company which works with a very strong principle. What do you mean by a principle? Principle actually means a moral rule. Yes, sir. It means
we will follow a specific standard and there is no deviation. So talking about health principle of K-Link, these are the 3 points: cleansing, balancing, and activation. So when we take care of these principles properly, the ultimate objective or ultimate what we get out of that is the best defense system. Sumata sir. सिद्धांत एक मतलब होता है आत्मिक नियम। केलिंग एक ऐसा संस्था है जो अपने सभी उत्पादों का अपने स्वास्थ्य सिद्धांत पे निर्धारित करता है, जैसे कि सफाई करना, संतुलित करना, जागृत करना और शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना है। सर, So the principle goes like this: cleansing, balancing, and activating. So when we talk about cleansing, there are two cleansing: external cleansing and internal cleansing. We all know we take bath, we brush our teeth, and we wash our face so that we would be, the external part of the body is clean. The internal cleansing is as important as external cleansing. Internal cleansing means removing the dirt, what is accumulating in the body. Balancing means there are many types of balancing. One is most important, nutritional balancing. It means we should have many nutrients. It can be carbohydrates, it can be vitamins, it can be minerals, and they have to be well balanced in our body. It should not be too low, it should not be too high. Activating is every part of our body has to be actively involved in working. For example, pancreas have to be active so that the food can be digested, and what we eat, the energy can be consumed. So the cleansing, balancing, activation is a cycle. ओके सर। सफाई करना मतलब आपका शरीर से ऊंचाओ तत्वों को हटाना, जैसे कि बाहरी सफाई और अंदरूनी सफाई। बाहरी सफाई का मतलब आपके त्वचा से धूल मिट्टी को हटाना, और अंदरूनी सफाई का मतलब आपके अंदरूनी अंगों से विषाक्त पदार्थों को हटा के आपके कोशिकाओं को स्वस्थ बनाना। जैसे कोशिकाएं टिश्यू बनाती है, टिश्यू जो अंग बनाती है, अंग जो तंत्र को बनाता है, और तंत्र हमारा शरीर को बनाता है। बैलेंसिंग जैसे कि संतुलित करना, आपके शरीर का अंदर के जो पुष्टि खाद्य पदार्थों को संतुलित करना है, आपके आम्ल और क्षारीय के संतुलन और शरीर के हार्मोन्स को संतुलन करना है। एक्टिवेशन मतलब वो जागृत करना है। शरीर का जब अंदरूनी सफाई और संतुलन जो होता है तो ऊर्जा का संचार होता है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल आपके सभी अंगों को जागृत करने में और पूर्ण रूप से कार्य करने में इस्तेमाल होता है, जिससे आपका शरीर चुस्त रहता है। So when we do this cleansing, balancing, activating perfectly, we get a perfect defense system. And our body is made, if you talk about the word healthy, you can split the word into two: heal and die. It means heal is taking care, curing. Die means by itself. Every body which has been created by nature would get into some sort of a problem. It can be because of a viral attack, it can be a bacterial attack, or it can be even because of some other factors. But the body can take care of itself. So what should we give the body? The basic nutrients, whatever it requires, we should provide the body. Yes, Sumata sir. जब आपके शरीर के अंदरूनी सफाई हो जाती है, संतुलन हो जाते हैं, जब हर अंग पूरा रूप से कार्य करना लगता है, जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा जाती है। स्वस्थ दो शब्दों से बनता है। पहले वाला जो शब्द है इसका मतलब है सही करना, और दूसरा वाला जो शब्द है इसका मतलब खुद को। शरीर अपने आप को सही कर सकते हैं, वो शर्तें उसकी सभी सही परिवेश मिले। We look at the basic problem what we are facing today. The top 10 leading causes of death. You would find that first is heart disease, second is cancer, third is stroke, and of course we have chronic lung diseases, accidents, and diabetes. So the red colored mark are the fundamental reason, and the key says they are all diet related. Chronic lung diseases might be because of the environment where we are. For example, if somebody
is living in a place where there are a lot of cotton is being used, then you would find that cotton dust can accumulate in their lungs and it can give you a lung problem. But majority of the problem, you look at it, it is because of the diet. It is because of the food what we consume. मृत्यु का 10 मुख्य कारण यहाँ पे दिया हुआ है। सर जो बोल रहे थे हार्ट डिजीज जैसे कैंसर, स्ट्रोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज जो है, और उसके साथ क्रॉनिक लंग डिजीज, एक्सीडेंट्स, डायबिटीज मेलिटस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, अल्जाइमर, किडनी और ब्लड इन्फेक्शंस। तो इसका मतलब है सही जो डाइट होता है वो हमारे लिए सही खान पान का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। Why should we do cleansing? For example, if we go on a diet, this commonly happens. The cleansing is very, very important. Even if you want to go down and reduce your weight, if you go on a diet, the diet alone does not help. Why? The body has toxins. So we go on a diet and we reduce our weight. Now, what happens is the amount of toxins, or rather the concentration of the toxins, is now becoming very high. Now the body has to handle it. How will the body handle it? It will add up more weight. So if you want to go on a diet and if you want to reduce your weight, the first thing what we need to do is do cleansing. And then if you go on a diet, you would find that you will be able to maintain that. So that is the importance of cleansing, because that is going to be the most important topic for today. हमारे शरीर के किसी भी अंग को इलाज करने के लिए शरीर का विषाक्त जो पदार्थ है वो हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। So let's look at where do we accumulate the toxins from? It's a very important thing. This does not happen suddenly. This happens on our 24 hours life. For example, the food preservation methods, what is being used is right now is drying, which we also use nowadays, pickling, that is also being used nowadays. But along with that, you would find that the cooling and sugar and salting is coming into the play now. So along with, there is one more area, the preservatives. So these are the ones that is actually adding a lot of toxins into a body. This happens every 24 hours. खाना को सुरक्षित रखने का जो तरीका सर बोल रहे हैं, पहले सुखाना, उसके बाद अचार, और उसके बाद चीनी और नमक, और उसके बाद ठंडा रखना। विषाक्त पदार्थों को ऐसे दूर रखें। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और अपने दिनचर्या कैसे बदले में, जिससे कि हम अपने शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों जमा होने रोक सके। The major culprit is the preservatives. What does a preservative do? Preservative fundamentally are used by the industry so that the shelf life can be extended. A simple, when we make a cake at home, it cannot be stored for more than 3 or 4 days. But when you ask a question, how does a cake which is being manufactured by a company which is packaged, the packaged foods, I make it very clear, the packaged foods, it can be food or it can be a simple atta. Anything that is packaged, which is being kept, is the major thing where we have the preservatives. And preservatives is the first culprit that adds toxins to our body. प्रिजर्वेटिव्स जो है वो हम लोगों का सबसे बड़ा काल्प्रिट होता है, और ये खाने में टॉक्सिन का जो तैयार होता है, टॉक्सिन जो तैयार होता है वो सबसे खराब होता है ये प्रिजर्वेटिव के लिए। Okay, the first thing is the plastic what we use. The plastic fundamentally has a bisphenol A, where it can be from bottled water, or it can be even when we consume simple plastic containers we keep at home. It can be from one of the best companies. Without this BPA, there is no plastic. So the first thing what we need to do is we have to remove plastic from whatever form it is. Any form of plastic, whatever degree, whatever gradation they have given, is the second culprit for bringing toxins to our body. सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे खराब जो टॉक्सिन होता है वो बीपीए होता है, बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए एक ऐसा विषाक्त पदार्थ है जो प्लास्टिक द्रव्य में मिलता है, जैसे कि प्लास्टिक बटल में भी ये मिल जाता है।
तो सबसे पहले ये हम लोगों को प्लास्टिक जो है इसको वर्जन करना चाहिए. Repeating, any form of plastic is really dangerous. The next, sodium कोई nitrate. Sodium nitrate is added in the food once again as a preservative, specifically in the meat. So today you would find that most of the people prefer to have stored form of meat, or rather frozen form of meat, and that has been linked to heart disease and diabetes. सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो कि मांसाहारी उत्पाद में इस्तेमाल होता है, जिससे कि हृदय रोग और मधुमेह की संभावना बढ़ जाता है. So the next biggest problem is from sodium aluminum phosphate. It fundamentally, it does few things in the food. It first of all thickens the food. It makes it solid. Then it makes the meat stay for a longer time life. And it is also a leavening agent. That is where the cakes or any form of biscuits which is packeted comes down. And finally, it is an emulsifying agent. And it also balances the pH, which makes it look good, but it is very dangerous. So the third villain, what we regularly consume on a 24-hour basis, is the sodium aluminum phosphate. सर अभी जो बोल रहे हैं ये सोडियम एल्युमिनियम फॉस्फेट के बारे में, ये खाने को गाढ़ा बनाते हैं और अच्छा रंग लाते हैं. ये एक जिंदा तत्व है जो केक और ब्रेड को बनाने में काम आता है. ये चीज में पानी और तेल को मिला के रखने में इस्तेमाल होता है. ये खाने से पीएच लेवल को बैलेंस करता है और उसका टेस्ट को भी बढ़ाता है. So if you look at it, we are around on an average, we are adding 200 plus chemicals on a everyday basis. Let us just talk one by one. Not everything. First, sodium lauryl sulfate or sodium laureth sulfate. Now, where is this being? This is used in shampoo or it is used in toothpaste. When is the industry using this? Actually, the SLS, sodium lauryl sulfate, is the task is on a mechanical garage ground where accumulation of grease is very high. To clean it on the weekend, they take a can of SLS, wear a mask. I'm not talking about the mask what we use for corona. I'm talking about a complete protective mask. It also supplies oxygen, and they spray this on the ground and leave it for 24 hours closed. And the next day morning, when they open it, you would find SLS has completely corroded all the grease from the floor. And then you wear a mask, you go inside, and then we clean it. Second, the ammonia. The ammonia, for example, hair dye. Hair dye talks about ammonia. Ammonia is a very strong medicine that can give once again, lung problem. In the first time I said that the chronic lung problem is for the external factors. What we do is we invite ammonia into our life, and that is going to give us a lot of problem. And ये सर जो बोल रहे कि हमारे शरीर में रेगुलर बेसिस पे 200 केमिकल जाते हैं. सोडियम लॉरियल एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है जो बहुत सारे बीमारियों का जन्म देता है, जैसे कि बच्चों में त्वचा का रोग. एमोनिया जो है वो स्वास्थ्य संबंधी रोगों को बढ़ा देता है. thing which I would like to reiterate once again. What happens is, this is most of the time used in the plastic, the toys which is used by the kids at home. Please remember, any toy which is used by kids at home, they have a habit of putting it into the mouth. Then you can understand how strong it is. And to add a point to this, which is not there in the slide, Sumata sir, you can listen to this also. Yes. Johnson & Johnson has stopped their baby powder. And they have said that it is because of marketing issues, but it is not. There are 1,800 cases against them because of this powder. So you can understand where these chemicals come down from. And the kids, the babies have been having serious issues.
So that is why we have to avoid chemicals as much as possible. सर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर होते हैं वो अभी बैंड है। जॉनसन एंड जॉनसन का कहना है कि वो मार्केटिंग इश्यूज के लिए वो अभी बंद है, लेकिन द इशू ये है कि उसके जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के खिलाफ नियर अबाउट 1800 केसेस चल रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज किया गया है। तो इसी बात पे हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि बच्चों को जो हम लोग खिलौना देते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं वो अपने मुंह पे लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे सोडियम लॉरियल ये कंपाउंड जो है एंटीबैक्टीरियल जो कंपाउंड है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों को ये बीमारियां आ जाते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ये ख्याल में रखना चाहिए कि ये जो प्लास्टिक जो है ये बच्चे से बहुत दूरियां रखना चाहिए। Okay, what about the food? In the food, there are three things. One is going to be the artificial sweetness, aspartame. And aspartame, once again, has been proven and tested that it is increasing type 2 diabetes, and it is creating cardiovascular diseases and fatty liver disease. This is basically, it's actually considered as a poison. Second, MSG. It is called monosodium glutamate. Generally, it is called Ajinomoto. But you look at it, it is the company's name which is Ajinomoto. Like something like Xerox. The name of the company is Xerox. It is not the Xerox, it is photocopying. But then you can understand how strong they have been into our mind. We say Ajinomoto. Ajinomoto fundamentally is MSG, monosodium glutamate, and HFCES, the high fructose corn syrup, which we have talked enough in when we talked about the situation on diabetes. And the last, partially hydrogenated oil. Today, every food is using the term partially hydrogenated oil. And that hydrogenated oil, we have talked about, create trans form of fat, which is not digestible by the body, and that creates a huge amount of toxins. Summarizing, artificial sweetness gives a lot of toxins. MSG, which is the Ajinomoto, which is being added in the food, mostly hotel made, does this. HFCS, any biscuits, any cakes, where you see the taste, any bread, if you feel a small little sweet taste, it is because of HFCS. And finally, every food that is packed has partially hydrogenated oil and have been claimed very, very dangerous for life. हमारे खाना में सबसे खराब तथ्य क्या है? एस्पार्टमे एक कृत्रिम मीठा है जो टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और फैटी लीवर को बढ़ाता है, जिससे कि कैंसर की संभावना भी बढ़ जाता है। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको पीएचओ कहते हैं, जो है सब्जियों का तेल है जो कि कोई प्रोसेस से गुजार कर के गाढ़ा हो जाता है, जो कि शरीर के अंदर ट्रांस फैट को बढ़ाता है। So fundamentally, what do we mean by toxin? Toxin is a poisonous substance which actually forms in our body because of two purposes. One, because of the metabolism. Second thing is from the external sources. We all now talk about air toxins, toxins through water, toxins through pesticides, toxins through light. So toxin is fundamentally becomes dangerous when it becomes very high in the nature. टॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर में तैयार होता है दोनों चीजों के लिए। एक होता है मेटाबॉलिज्म के लिए और एक होता है बाहर से बहुत सारे चीज जो अंदर हम लोगों का शरीर में प्रवेश करता है। So how do we avoid toxins on a daily basis? First thing is, today you would find that the non-stick, whatever vessels we have, okay, all of them were Teflon coated. Even today, if you look at the advertisements, they say it is Teflon coated. You can scratch it n number of times. Even if you scratch it n number of times, the Teflon does not go away. But Teflon fundamentally has on. So the suggestion is use cast iron. That is simple, good old method, the iron vessels what we have been using.
Yeah, sir, tell me one thing, sir. You were just telling previously that Teflon, you are using the Teflon is coating is not remaining for much more time. No, it is not remaining. The advertisements have been saying Teflon will stay for a longer time. So what they do is they do the scratching and they do a demonstration. But Teflon is bad for health. Teflon has been proven that is one of the fundamental reasons for cardiovascular disease, once again, liver and kidney issues. ओके 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 सो टेफ्लॉन को हम लोगों को मतलब टेफ्लॉन को हम लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टेफ्लॉन का रहने से क्या होगा, हम लोगों का कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, और उसके बगैर हम लोग कास्ट आयरन वाला जो चीज होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं. Second is aluminum. Aluminum once again came into the industry maybe 30-40 years back because it is able to retain the heat. So avoid aluminum. Once again, aluminum has been once again proven it is dangerous for the food. It poisons the food. Better to use glass products or ceramic products. एल्युमिनियम जो होता है ये बहुत पुराना साल से ये हम लोगों का यूज हो रहा है घर पे, लेकिन इसको हम लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का जो खाना होता है ये खाना को एकदम पूरा विषाक्त पदार्थ बना देते हैं, तो उसका रिजेक्ट करके हम लोग ग्लासवेयर यूज कर सकते हैं. Next, once again, today you would find that we have started using copper for cooking. Copper is not good for cooking. Copper bottom vehicles can be used, but copper bottom vessels can be used, but copper should not be used. Even in south side, you would find that is in Tamil Nadu and Andhra and Karnataka, we have been using copper only to store water, never for cooking. Never for cooking. But today you would find that the trend is, you would find copper vessels have come down, and it is because it is faster in cooking. Today copper has come down. But once again, no to copper, better to use stainless steel. कॉपर जैसे जिसको तामा कहते हैं, इसको खाना पकाने के लिए बिल्कुल मत कीजिए. इसको पानी रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं. खाना बनाने के लिए आप स्टेनलेस स्टील का जो मटेरियल है वो आप यूज कर सकते हैं. And the recent trend for the cooking vessel is ceramic coated. I'm making it very clear, ceramic coated. Ceramic coated once again has become a problem, but ceramic vessels are good. Ceramic coating is once again has been proven that it is dangerous for health. Once again, cardiovascular, liver, kidney, and sugar. For these four issues, the ceramic coated vessels used for cooking has been given the importance. So use ceramic and not ceramic coated. सिरामिक कोटेड अगर बर्तन आप लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे डिजीज आ जाता है हमारे शरीर में, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, लीवर. लेकिन अगर आप प्योर सिरामिक अगर यूज करेंगे तो ये ठीक रहेगा. Now let us look at. Sir, you're using the slideshow, sir. Yeah, I can. Yes, I can see. Yeah, okay. Everybody is able to see. Yes, slides also. Cool. Only my video is not there, right? Cool. Okay. Now Yes. this is a common information all of us know. What is this? This is a common, we talk about where we get toxins from. Toxins come from air, toxin comes from water, toxin comes from the food, toxins comes from the noise, and toxins come from the light. This is the general thing what we talk to the people. But along with this, whatever we have spoken today, you need to talk to the people so that on a 24-hour basis, they will be able to avoid toxins getting into the body. टॉक्सिन जो विषाक्त पदार्थ है ये कहाँ से आते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि रोशनी से आता है, नॉइज जैसे ध्वनि से आते हैं, और खाद्य से आते हैं, जल से आते हैं, और वायु से भी आते हैं. Now, the internal toxins, proper urination, proper expelling, and improper breathing. Now, these are the fundamental problems. And the products, whatever we have, you will find that it helps in removing the internal toxins from our body. शरीर के अंदरूनी जो विषाक्त पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि ज्यादा समय तक अगर हम लोग यूरिन को रोक के रखते हैं
फाइबर की कमी होने से भी होते हैं, जैसे कि जिसको अनियमित विसर्जन कहते हैं। और दूसरे हैं अनियमित सांस लेना। उसमें क्या होता है, शरीर के अंदर में CO2 जाता है। Okay, now let us look at the cleansing, balancing, and activation once again. What is cleansing? Ensuring the body is not having anything other than what it is supposed to have. Balancing. Body is given the right amount of nutrients and all nutrients what is required. And activating. Internal organs should be active. At the same time, externally, we also have to be active. I think today what has happened is walking is because there is a doctor is prescribing a walk. Walking should not be by prescription. Walking or jogging or cycling has to be a part of our life. ये तीनों पार्ट सर फिर से बोल रहे हैं, जैसे कि क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेशन। क्लींजिंग मतलब जो बॉडी को पूरी तरह की सफाई करना है, और जैसे कि बॉडी को पूरा तैयार करना है ताकि इसका जो पुष्टि जो है हम लोग इसको दे सकें। उसके बाद पूरा बॉडी को संतुलित भी करना है। फिर उसके बाद हम लोगों का बॉडी को एक्टिवेशन मतलब जागृत भी करना है। And this is the old pyramid, whatever people have been talking. Lot of grains and vegetables and then milk, and on top of it fat and oil. But the current food pyramid is this. Fruits. Above fruits and vegetables, we have whole grains. Above that, we have protein. Above that, we have this. And top of it, we have sugar, which means we have to avoid sugar to the maximum possible thing. This is the new pyramid which we have to follow. ये खाद्य का एक पिरामिड है जिसमें जिस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि कौन सा खाना हम लोगों को कितना परिमाण में लेना चाहिए, और इसमें एक सलाह दिया गया है कि जितना हो सके आप चीनी को अवॉइड कीजिए। Okay, now let's come down to the second part. That is going to be the balancing. What does our body need? Our body need, most importantly, the 8 essential nutrients. They not only provide energy, they help in maintaining the health of the body. हम लोगों को शरीर को 8 जरूरी तत्व जो है वो चाहिए। क्या क्या है वो? उसमें से प्रोटीन है, पानी है, विटामिन डी है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन सी है, और इसमें फैट भी है, विटामिन बी है, और आयरन भी चाहिए। So, for example, there are common vitamins which we require. Now, when we look at our products like chlorophyll, you would find why is always chlorophyll a success? Because whatever vitamin what our body needs, what our minerals our body needs, is everything is available. So let's look at the common vitamins. Vitamin A, the B, complete B complex, vitamin C, vitamin D, and vitamin E. And the common minerals, calcium, magnesium, phosphorus, selenium, potassium, zinc, manganese, and iodine. All of them are required on a daily basis. One additional thing is minerals can be stored in the body. Vitamins cannot be stored in the body. So vitamins have to be taken every day, except for vitamin E. Little bit of vitamin E can be stored, but no other vitamin can be stored in the body. So vitamins have to be taken on an everyday basis. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या कॉमन विटामिन और कॉमन मिनरल्स हम लोगों को शरीर के लिए चाहिए। और जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल आज इतना सक्सेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितना भी कॉमन विटामिन और कॉमन मिनरल्स है वो सब क्लोरोफिल में है। जैसे कि कॉमन विटामिन के बारे में बताया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी एंड डी। और कॉमन मिनरल्स में है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज एंड आयोडीन। और लास्ट में एक चीज बोल रहे हैं कि सर जो विटामिन जो है, विटामिन हम लोगों को डेली लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है। कंपैरेटिवली आपका जो मिनरल्स जितना भी है, मिनरल्स हम लोगों का शरीर में स्टोर हो सकता है। And every mineral has a purpose behind it. It is just not, you would find that it gives help. It does a lot of bodily function for our
our body to function, we need minerals. And every mineral, I'm repeating once again, it is just not only for health, for bodily functions, we need the minerals. Calcium, magnesium, phosphorus, they are called as major elements. And trace elements, that is, which we need in a minor form, is copper, fluoride, iodine, iron. Iron, we all think it is a must, it is a lot, it is required in lots, but it is not. It is required only in a smaller quantity. But every one of them, look at the last one, for example, zinc. Zinc is very important for nearly 100 plus enzymes to work perfectly. So enzyme secretion is one, and enzyme actively working is second. All enzymes can work only when we have zinc in the body. यहाँ पे जितना भी मिनरल्स है और एलिमेंट्स जितना भी है, ये सब हम लोगों का बॉडी का कार्य करने में मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक, जो 100 एंजाइम्स के ज्यादा भी है और 100 एंजाइम्स के ऊपर काम करता है, और इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों का काम करते हैं। And every mineral or any vitamin should be properly balanced. That is what is called as nutritional balance. For example, if somebody takes too much amount of zinc, where is too much amount of zinc? In betel leaves. In betel leaves, you have a lot of zinc. So what they have found is people who have been regularly, constantly eating a lot of betel leaves have problem in the hearing. So anything which is too low will be giving you a hypo problem. Anything which is too high will give you a hyper problem. So everything has to be balanced. It should not be too low. It should not be too high. Same way, the power of hydrogen. On the right hand side, it's a clear scale where what is the acidity or what is the alkalinity, what is pH, how much amount of hydrogen ions are there, or how much amount of hydroxide ions are there. More hydrogen ions, acidic. More hydroxide ions, basic. Is acid bad? No, it is not bad. For example, skin has to be acidic. Pancreatic juice has to be alkaline. Blood has to be alkaline. So it is not that acid is bad and alkaline is always good. Once again, a balance, a proper pH balance is also very important. That is why you would find Kaling product have been working on giving a nutritional balance as well as the pH balance. हम लोग जो भी विटामिन और मिनरल्स लेते हैं वो संतुलित रूप से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विटामिन ज्यादा ले लिया, मिनरल्स कम ले लिया, और मिनरल्स ज्यादा ले लिया, विटामिन कम ले लिया। ऐसा नहीं, दोनों का संतुलित बजाय रखना चाहिए। किसी भी द्रव्य में H2 का जमा होना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन जमा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड जमा होगा उतना ज्यादा एल्कलाइन होगा। The next, activate. So there are two types of activating. That is, you would find that working internal organs being active. For example, if pancreas is active, pancreas can generate insulin and pancreatic juice for digestion. So there are two types of activation. One, external activation, and internal body activation. They are tightly linked. They are tightly linked. If we have physical active life, then that automatically helps the internal organs also to be very active. हम लोगों का जो एक्टिवेशन जो होता है, जैसे कि जागृत करना, ये दोनों तरह का है। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अगर हम लोग बाहर बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो वो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स होता है, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट रखते हैं। Okay, the next few pictures are going to be purely about exercises. It is not about yoga. The images what I have is about yoga as well as normal exercises. Perform the exercises. If you are not able to, I am not saying that we have to do all these things. The most simplest thing is walk.
सर ये नहीं बोल रहे कि ये इतना भी योगा और ये एक्सरसाइज इतना सब कुछ करने के लिए, बट सर जो सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहे हैं, जो सही तरीका है बॉडी को एक्टिवेशन रखने के लिए, वो है सिंपल वॉकिंग, पैदल चलना। And when exactly, and when we walk, you have to walk and nothing more than that. No music, no talking. We have to tell our body we are walking. But today, most of the gymnasiums and most of the people, which we see people walking in the park, they are listening to songs. So when you listen to a song, your body thinks we are relaxing and we are not exercising. If you keep talking to a friend when you are walking, the body thinks we are chatting and we are not walking. So to emphasize the point to the body that we are walking, we have to do brisk walking at least for 20 to 30 minutes every day. Brisk walking, nothing other than walking. जब हम लोग पैदल चलते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग जो भी करते हैं, तो इस टाइम ना हम लोगों को एकदम बिल्कुल हेडफोन नहीं लेना चाहिए और किसी दोस्त के साथ चैटिंग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग ये म्यूजिक सुनते हैं तो एक्चुअली बॉडी माइंड ऐसे हम लोगों का ऐसे फील आता है कि हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, बट वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि चैटिंग अगर करते हैं दोस्त लोगों के साथ, तो एक्चुअली माइंड में ऐसे रिफ्लेक्स हो जाता है कि हम लोग चैटिंग कर रहे हैं, बट हम लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, मतलब बॉडी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। And look at it, like, remember, this is a very, very important point. Walk. Do nothing other than walking. It's a very, very important thing. Next. Okay. Ensure this problem should not have. So the first problem you have to remove from your life is constipation. You should not have this particular problem. I show this slide, sometimes it's very funny, but the problem because of the constipation is the biggest problem what we face today. So ensure there is no constipation in life. There's a product there. Yes, we have a product, K-Lax, that would be very helpful. So first removal is removing the constipation. ये हमारे शरीर से सबसे पहले हम लोगों को रिमूव करना चाहिए अगर कंस्टिपेशन का इशू है तो कंस्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों का केलिंग का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो केलैक्स कहते हैं। It is not बहुत अच्छा product, बहुत अच्छा product. Yes, sir, बहुत अच्छा। And one small information to all of us, it just talks about how much time it takes for the body to digest. This is very, very important. Anybody who has constipation, you have to be very careful. You have to choose the products carefully so that constipation would not affect us. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे जितना भी फ्रूट्स है और खाना भी है, इसका साथ टाइम भी दिया हुआ है कि पाचन क्रिया में कितना टाइम लेता है हर एक फ्रूट्स और हर एक खाना। तो हम लोग को जब खाना खाना चाहिए और फ्रूट्स लेना चाहिए, तो हम लोग को ये चूज भी करना, ये सिलेक्टिवली करना चाहिए कि कौन सा फ्रूट कौन सा टाइम में ले, कौन सा फूड कौन सा टाइम में ले और कितना टाइम लेगा ये डाइजेशन करने में। Specifically, as in India, we use a lot of rice. Choose brown rice and not the white rice. So now let us look at the products which does all three: cleansing, balancing, and activation. I'm repeating once again. I'm going to just show only the products that does all three together: cleansing, balancing, and activation. So first is K-Lax. सर कुछ प्रोडक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्ट्स ये काम बहुत अच्छी तरह करता है, सफाई करते हैं और संतुलन भी मेंटेन करता है और एक्टिवेशन मतलब जागृत भी करते हैं। फर्स्ट इज K-Lax. पहले वाला है K-Lax। क्लोरोफिल। दूसरे में है क्लोरोफिल। K liquid spirulina. This is one product we have talked a lot. Very, very important product. This is one of the most important product because spirulina is supposed to be the first formed organism in the world. The first formed organism in the world is spirulina. Very rich in nutrient, cleanses the body,
balances the body, and it does a lot of activation to the internal organs. स्पिरुलिना विश्व का सबसे पहले ये सबसे बड़ा अच्छा उद्भिद है और ये सबसे अच्छा काम में आते हैं एक्टिवेशन और बैलेंस क्लींजिंग बैलेंसिंग और एक्टिवेशन के लिए और इसमें बहुत सारे पुष्टियां भी दिया हुआ है. Next is K-Flax. This is once again a product which does all the three things: cleansing, balancing, and activation. And this we have talked enough, but anyway, I'm repeating once again, this is supposed to be considered as good as chlorophyll. Both have to be every day's part of our life. K-Flax भी बहुत अच्छी तरह से क्लींजिंग बैलेंसिंग और एक्टिवेशन करता है हम लोगों का शरीर से और ये K-Flax और क्लोरोफिल हम लोगों का डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए. The next product, I think it would be difficult for a lot of people to feel. Ayurveda, is it a cleansing product? Yes, Ayurveda is a cleansing product specifically for our throat and our lungs. आयुर्वेद भी बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं, लेकिन किस चीज का सफाई करते हैं? हम लोगों का थ्रोट मतलब गला का और लंग्स का, फेफड़े का. And the next is K-Light. Fine. When we look at K-Light, generally we feel it is for liver. But in fact, you would find that even the box would say it is a tonic for the liver. But when I looked at all the ingredients, they have created in a way, not only it helps the liver, it also helps the other organs also to work perfectly. So K-Light also is to be considered a product which will handle cleansing, balancing, and activation, because liver is the organ along with kidney does a lot of cleansing in the body. So K-Light also, if anybody has high toxins in the body along with chlorophyll, please suggest K-Light also continuously at least for 3 months. और केलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब हम लोग इसको लेते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि ये लीवर को ही क्लीन करता है, लेकिन लीवर के साथ साथ ये बहुत दूसरे अंगों की भी क्लीन करते हैं और ये एक प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर का क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेशन ये तीनों मेंटेन करते हैं. And the last, for constipation, K-Lax, and it not only once again ensures you don't have constipation. K-Lax, the components of K-Lax also cleans the intestine. K-Lax जो है वो हम लोग का इसमें जो कंपोनेंट्स होता है, तो ये हम लोग का जो इंटेस्टाइन है, जो अंत्र है, ये अंत्र को क्लीन करता है. And the last product, K-Roll, I said the same thing last time. I have become a fan of K-Roll. I have consumed nearly 4 boxes of K-Roll in the last 1 month. Trust me, the last 1 month I have consumed 4 boxes of K-Roll. Right now I have 1 box. I'm going to be here in this town for one more week. Within that 1 week, I'll finish that box also. So K-Roll not only balances the cholesterol, I found it also helps the liver also to be function perfectly. K-Roll जो है ये सिर्फ हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता, इसको हम लोगों का लिवर को भी बहुत सारे हेल्प की करता है. I'm repeating once again, Sridhar Arumugasamy, the trainer of K-Link, not only has been using K-Flax, I have become a fan for K-Roll. Okay. Next slide is going to be fan हो गया है K-Roll का. Okay. Not only bilkul, a big fan. Okay. Next slide is going to be, of course, not बहुत बड़ा fan है K-Roll का. Okay. Let me just thank Sumanta sir. Actually, he did an excellent job. Welcome, sir. Yeah, you did an excellent job. And let me thank Sharanya and let me thank K-Link for giving this opportunity to meet all of you, to listen. And I was able to also listen to Hindi, and he did an excellent job in terms of conversion. Thank you. So thank you from me and thank you from K-Link. Thank you, sir.
Thank you so much, sir. So it was a fantastic session, sir. आप जो बताए तो ये सब हम लोगों को एक informative session था, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन आपने शुरू करने के समय आपने बहुत सारे टिप्स हम लोगों को दे दिया, ऐसे जो हम लोग टेफ्लॉन और आयरन, कैस्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील, ग्लासवेयर, इतना सारा डिस्कशन, और वॉकिंग कैसे करना, ये सब आप पहले आप हम लोगों को एक्सप्लेन करके जैसे जनरल टिप्स जैसे हम लोगों को दे दिया। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स आपने डिस्कस किया, लाइक के लैक्स के बारे में आपने बताया, और क्लोरोफिल के बारे में, के लाइट और आयु सूद सिरप, ये सब प्रोडक्ट, ये सब फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। और आपके रिक्वेस्ट सर, व्हेन वी हैड अ सेशन यू टोल्ड दैट दिस प्रोडक्ट्स, दिस आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, it would be better that if Dr. Rupam Bhatt, if he speaks about these products, and we had a session now. So last Saturday Good. we had a session, sir. Like Dr. Rupam Bhatt, he discussed many products, some important products about Ayurveda, and he told about the ingredients. He also discussed about the ingredients about it. So many people they joined, and we learned many things in that session, or in this that session. So it happened because of you. So I should say a very big thanks to you, sir. So you can see here, Yes. wherever I stay, my Carol was next to me. Yes, sir. So we are because many members who have joined, everybody we are using the Kaling product. और आज जो मेंबर्स आज ज्वाइन किए हैं, ये सब वो भी जान चुके हैं क्या क्या प्रोडक्ट है ऐसे क्लेंजिंग के लिए, और इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या क्या है, सब हम लोग आज का सेशन में हम लोग जान चुके हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर श्रीधर आरुमुगसामी सर, क्योंकि हमेशा सर हम लोगों को इतना एफर्ट ले रहे हैं, और इतना अच्छी प्रेजेंटेशन से हम लोगों दिस सेशन इज अ वेरी बिग मार्केटिंग टूल फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू श्रीधर सर। And I wanted to thank Mr. Sumanta Sarkar sir also, because आपने जो ट्रांसलेट किए सो अच्छी तरह आप भी ट्रांसलेट किए सर। सो थैंक यू सो मच सर। और केलिंग मैनेजमेंट को, बिकॉज ऐसे अपॉर्चुनिटी मुझे केलिंग मैनेजमेंट से मिला, सो आई वांटेड टू थैंक केलिंग मैनेजमेंट एंड आवर केलिंग इंडिया डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मंथ में भी ऐसे सेशन, बहुत सारे सेशन नेक्स्ट मंथ में भी है, so please all of us please join in the coming session also. So thank you all and thank you so much. Yeah, thank you everybody. Thank you.